So with that confidence only I went in from first day कि I have to do it in 1 year. I decided I have to do it in 1 year and I'll do whatever it takes. So welcome guys back to another episode of IIT Podcast with Somnath. And today I have a very special guest. So you know already, as you have been following the podcast, I've been interviewing people who have cleared IIT, sometimes IIM. But this guest not just cleared IIT, he managed to clear another level of toughness, which is the UPSC exam. And now he's an IAS officer. So welcoming my next guest, Prakhar Singh. Hi, Prakhar. Hello Somnath. So I am Prakhar. I am currently posted in Madhya Pradesh. Uh, So yes, Somnath and I were batchmates as well as hostel mates also. प्रखर आप फॉलो किए होगे पॉडकास्ट तो जनरली थ्री पार्ट्स में वी डिवाइडेड तो एक है लाइफ बिफोर आईआईटी एट आईआईटी एंड देन बियॉन्ड फॉर योर केस लाइफ बियॉन्ड आईआईटी इज वेरी इंटरेस्टिंग तो फोकस करेंगे उस पर बट स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट सेक्शन लाइफ बिफोर आईआईटी सो प्रखर हाउ वर यू एज अ स्टूडेंट आपको मतलब पता था कि आई एम ब्राइट और फिर मुझे आगे बढ़ के कुछ करना है लाइफ में या कब से आप सीरियस होने लगे अबाउट स्टडीज? स्टडीज के बारे में सीरियस रहे हमेशा से क्योंकि मतलब माय इंटायर फैमिली में लोग सब जॉब जॉब वाले ही लोग थे पूरे फैमिली में और गवर्नमेंट जॉब वाले ही लोग थे। तो इंजीनियर्स थे सब, तो सबको ये था कि पढ़ाई से ही कुछ हो सकता है। तो एवरीबडी इन माय फैमिली लाइक डैड मॉम फिर रिलेटिव्स अंकल आंटी सब सीरियस थे पढ़ाई के बारे में, उनके बच्चे भी सब। तो प्रेशर हमेशा से रहा परफॉर्म करने का, ट्रांसफ़र होते रहते थे पापा के। तो क्या कहते हैं, एग्ज़ाम स्कूल चेंज हो रहे हैं पर यू हैव टू कीप वर्किंग एंड कीप कमिंग द टॉप। तो टॉप 5 में हमेशा से रहता था मैं। पर ये कभी मतलब देयर वाज नॉट एनी idea कि there's something called IIT or there's something called that. You just have to achieve the immediate goal and just move on to the next. अच्छा, तो आईआईटी के बारे में स्पेसिफिकली आपको कब पता चला? I think ninth or 10th में my father got to know from somebody that there's something called IIT and you have to do this and this for clearing IIT. So he got me some books of brilliant tutorials in ninth or 10th class, to study and to study for IIT. So there were a lot of books which came at once, and there were test series and a lot of things were there. I did not used to do all of them because I could not do. We had schools also, plus we had to like enjoy life also apart from just studying. So we I studied some of them, but not the whole thing. But then in 11th, sorry, 10th last, coachings के ये बंसल वगैरह के एग्जाम्स यूज्ड टू हैपन. So my dad took me to one of them and Bansal का exam I think I gave and I cleared it and then I went there and then understood कि यार अच्छा ये है system. Okay. अब बोले बंसल क्लासेस राइट, तो बंसल क्लासेस के लिए आप कोई कहीं स्पेसिफिकली मतलब हॉस्टल लेके प्रिपेयर कर रहे थे कि घर से ही? बंसल was in कोटा. तो कोटा में you had to study for 11th and 12th. तो आफ्टर 10th का बोर्ड एग्जाम्स आई वेंट कोटा एंड देन फिर वहाँ जाके पता चला कि यार यहाँ पे बैचेस होते हैं, लाइक 40 बैचेस इन 11th क्लास ओनली फॉर कोचिंग. फिर आई हैड बीन असाइंड P2 बैच. तो वी डिड नॉट नो, मतलब वहीं जाके वी चेकड इन द साइबर कैफे कि कौन सा बैच आया है रोल नंबर डाल के. तो देन ओनली वी केम टू नो कि P2 बैच है. तो इस लाइक ए से पी तक होता है, होगा कुछ तो पता नहीं फालतू सा बैच होगा. देन समबडी टोल्ड मी कैफे में कि नहीं ये सेकंड नंबर का अच्छा बैच है तो यू गॉट अ गुड थिंग. देन ठीक है, अच्छा है. फिर उसके बाद गए वहाँ पे. फिर द फर्स्ट डे वाज वेरी मतलब शॉकिंग. सच ए ह्यूज बिल्डिंग. आई हैड ऑलवेज बीन इन एमपी, ऑलवेज इन स्मॉल स्मॉल cities. So I had not seen such big buildings, such a large amount of students also. A lot of students का पार्किंग लॉट ही इतना बड़ा था जितना मतलब पूरी पूरी क्या कहते हैं स्कूल होते हैं इतने बड़े बड़े. पर उसका पार्किंग लॉट है, साइकिल्स पे साइकिल्स खड़ी हुई हैं. फिर जा रहे हैं वहाँ पे, इतने सारे बच्चे हैं, लेट भी हो गए उसमें, लास्ट में बैठ रहे हैं. कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है पहली क्लास में. हैं, फिर लग रहा है, फिर वहाँ पे लोग बोल रहे हैं दूसरी तीसरी क्लास के बाद कि यार देयर आर पीपल हु हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 8th क्लास और सम क्लास फॉर आईआईटी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग 11th के इस टॉपिक में.
I was like, ठीक है, let's see what happens. We'll see how it goes. Then ठीक है, then slowly क्या कहते हैं, सब ठीक हो गया. ओके, थोड़ा आप एलाबोरेट कर सकते हो कि कैसे ठीक हो? मतलब एक तो है कि एट वाले अभी के जनरेशन आर इवन स्टार्टिंग बिफोर दैट, मतलब सिक्स सेवन स्टैंडर्ड से प्रिपेयर कर रहे हैं एक गोल के लिए कि आईटी क्लियर करना है। तो आपके टाइम पे देख से कि एट क्लास से लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और आप आ रहे हैं इलेवेंथ क्लास के स्टार्टिंग में, राइट? 11th में. हाँ, तो हम्म. वहां से हाउ डिड यू कैच अप? नहीं, so 11th में I like I did not do that well. Slowly from P2 I went to P5 at the end of 11th. So somehow क्या कहते हैं, I started wasting a lot of time and not studying, not doing all the things they prescribed us to do in coachings. है ना, because first time out of, नहीं, I was not actually first time out of house. I had studied in hostels. I had stayed in hostels in 7th and 8th. But still, मतलब not that serious in 11th class. I made through as not like out of the game, but P5 was still pretty bad. So in 12th, I switched both my coaching and my hostel. So then I had a very close group of friends, like three of us, me, Akash, and Manish. We three of us were there in the same hostel, and in the same. So no, me and Manish were in the same coaching, and Akash was in different coaching. So then I got settled. Then I started studying again, and seriously this time. Then ठीक है, then फिर 12th में I studied, and I think most of my success of clearing IIT goes to the last 3 or 4 months just before the exams, of writing those mock papers, a lot of mock papers, like basically tactical things कि आप mock paper जितने सारे लगा के कर लोगे तो selection is ensured. ओके, तो आप बेसिकली नॉट जस्ट लास्ट ईयर बट लास्ट हाफ ऑफ द लास्ट ईयर में प्रिपेयर करके क्रूज करें। Prepare तो last 2 years से I was doing only, मतलब fundamentals were there, but last 3 4 months में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी, क्योंकि वो नहीं करते तो आई डोंट थिंक, आई नेवर लाइक फिजिक्स, आई नेवर अंडरस्टूड फिजिक्स ऑल्सो. सो लास्ट 3 4 मंथ्स में ही आई मेड श्योर कि फिजिक्स में आई डोंट फेल, बिकॉज आई आई टीज में वी ऑल्सो हैव सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, राइट? सो सब्जेक्ट का कट ऑफ ऑल्सो यू हैव टू क्लियर. सो इफ फिजिक्स में आई फेल देन आई एम आउट ऑफ द गेम. सो देन लास्ट 3 4 मंथ्स में आई स्टडी दो एच सी वर्मा और शीट्स वगैरह जो होती थी, तो वो करके देन आई मेड श्योर कि ठीक है, सिलेक्शन फिजिक्स में भी हो जाए. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स हु माइट बी लिसनिंग कि ऐसा नहीं है कि इवन इफ यू आर 6 मंथ्स अवे फ्रॉम द एग्जाम और प्रिपरेशन या कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि क्लियर नहीं कर सकते। मे बी जस्ट थोड़ा सा प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा, क्लियरिंग कट ऑफ, मतलब वो सब रख के अगर यू प्रिपेयर तो या देयर इज डेफिनेटली स्कोप। तो ग्रेट प्रखर, तो आपका अभी आते हैं हम लोग आईआईटी एग्जाम डे एक्सपीरियंस। तो उसका कुछ याद है? एटलीस्ट 14 ईयर्स ऑलमोस्ट होने को है। नहीं, दैट एग्जाम डे आई डोंट थिंक एनीवन एवर फॉरगेट्स. So exam day, I remember clearly. I had to go to Jabalpur. I was staying in a district called Damo, and then I had to go to Jabalpur. So me, my friend, and my dad, we rented a car, and then we went to Jabalpur to give the exam. So we stayed at my uncle's place. No, we stayed at धर्मशाला. So मॉर्निंग में हम लोग गए, एक मेरा एक कॉलेज में एक सेंटर था. तो फर्स्ट पेपर 9 से 12, 9 से 12 था, फिर 2 से 5 था. So first paper went bad, not as well as I had hoped. So I was crying after, like in the 12 to 2 period, I was crying with my dad. And then I told my mom, then she started praying and all everything. So the second paper went amazingly well. I don't remember the scores now, but second paper, I could feel like I am done, I am selected after second paper. So just after second paper was over, I came outside the center and I told my dad कि selection तो हो गया. अब now you had promised me that you'll get me a mobile after I get selected. So I was searching for shops, but Sunday था तो जबलपुर is closed on Sunday. So the market was closed. So after I think 1 month or so, I bought the phone. Before the result actually came, I bought the phone. सही, मतलब धीरे धीरे यू आर कमिंग आउट की स्लॉग ओवर्स चैंपियन। मतलब फर्स्ट हाफ अच्छा जाए ना जाए, सेकंड हाफ में यू मेकअप। हाँ, फर्स्ट में तो थोड़ा मतलब खराब ही गया था. ओके, तो आप रिजल्ट डे के बारे में भी बोल रहे थे। डू यू रिमेम्बर कि रिजल्ट डे में जब रिजल्ट आने को है,
एक तो हमारे टाइम पे इंटरनेट वाज नॉट दैट ग्रेट, प्लस आपका कोई एंजाइटी हो रहा था कि या पता था कि हाँ क्लियर हो जाएगा? आई वाज श्योर कि हो जाएगा, बट फिर भी मैं सो रहा था उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आया था। डेट वेट का पता नहीं मेरे को कि पहले से अनाउंस हो जाती थी या नहीं, बट आई वाज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। आई थिंक माई फ्रेंड कॉल्स मी एंड सेड कि यार मेरा तो नहीं हुआ, यू चेक। So I woke up, I opened my phone and I just entered my roll number, and it gave me not selected. So then I remembered कि यार आधी नींद में हो, you must have remembered the wrong roll number. तो then I went searching for my admit card and I searched the admit card, ठीक है, I had entered one number wrong. तो फिर मैंने सही डाला, देन सिलेक्शन हो गया था, रैंक ठीक ठाक आ गई थी। तो देन फिर उसके बाद का एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, बस सो के उठने का और गलत रोल नंबर डालने का आई रिमेम्बर। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर दैट आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, कोई सेलिब्रेशंस का कुछ याद नहीं? हुआ होगा आई थिंक, बिकॉज पर आई डोंट रिमेम्बर, एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर। नाइस, ओके, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग की जो सिलेक्शन इज डन, अभी टाइम मिलता है थोड़ा टू सिलेक्ट द आईआईटी एंड द डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन रैंक या प्रेफरेंस, जैसे भी आप बोलो। तो हाउ डिड यू गो अबाउट चूजिंग मैकेनिकल इन केजीपी? आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो आइडिया बेसिकली। सो आई जस्ट सर्च द इंटरनेट कि what is actually the preference of colleges and what is the preference of क्या बोलते हैं, स्ट्रीम्स। तो आई जस्ट फील्ड कि आईआईटी बॉम्बे सी एस, देन आईआईटी क्या कहते हैं दिल्ली सी एस, देन आईआईटी कानपुर सी एस, देन केजीपी सी एस, एंड देन इस टाइप का आई फील्ड। बट somehow on the last day I filled this IIT KGP dual mechanical above IIT Bombay chemical or something, for some reason I don't know why। उसके एक आध दो दिन पहले मेरे को पता चला था शायद कि डुअल डिग्री करके कुछ होता है। तो देन आई फिल्ड दैट एंड फाइनली आई वाज अलॉटेड दैट। ओके, ग्रेट। तो हाँ, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट सेक्शन की लाइफ बिफोर आईआईटी। तो एक नेक्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन फर्स्टली पूछूंगा कि लाइफ एट आईआईटी में डू यू रिमेम्बर योर जर्नी टू खड़गपुर एंड खड़गपुर के फर्स्ट इम्प्रेशंस क्या थे आपका? आई डोंट रिमेम्बर द स्टार्टिंग, बट एंड में, मतलब ट्रेन से हम लोग गए थे, तो एंड में व्हेन वी लैंडेड ऑन द रेलवे स्टेशन, खड़गपुर रेलवे स्टेशन, तो इट वाज रेनिंग। आई थिंक it was raining, and there was a bus for all of us to take us to the campus, I think from the college itself. So then me and my dad were there, and we क्या कहते हैं, put our luggage on the bus, and we went to the campus. तो as the bus was going through the campus, you were seeing all the things, I was like happy कि हाँ ठीक है, अच्छा सा कॉलेज है, बढ़िया है। क्योंकि बंसल में जब हम लोग थे तो हर जो नोटबुक होती थी, नोटबुक के पेज पे एक एक कॉलेज का फोटो बना होता था, आईआईटी के, आईआईटी के जीपी, आईआईटी दिस, आईआईटी दैट, आईआईटी दो। तो वो देख के इमेज तो याद थी कि यार ये है, बट देन एक्चुअली सीइंग द बिल्डिंग एंड देन गोइंग इनसाइड एंड सिटिंग इन द, आई थिंक वी मेड टू सिट इन दैट थिंग, क्या बोलते हैं जो जहाँ पे कंप्यूटर लैब्स होती थी, कंप्यूटर लैब वाले उसमें। वी तक्षशिला में? तक्षशिला, तक्षशिला में नहीं, उसके बाद भी था ना एक विक्रमशिला? उधर, विक्रमशिला में। आई थिंक वी वर मेड टू सिट, यस। पेरेंट्स हैड टू स्टे आउटसाइड, एंड वी वर फिलिंग फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन वगैरह के। तो यस, ऑल दैट आई रिमेम्बर। ओके, तो आप वो बोल रहे थे कि बंसल क्लासेस में आईआईटी के पिक्चर्स होते थे ना डिफरेंट, तो दैट इज हम्म। या वन ऑफ द इंस्पिरेशन की यू नो, अगर टाइटल कार्ड देखोगे आईआईटी पॉडकास्ट में, हर आईआईटी का काइंड ऑफ पिक्चर डालते हाँ, हैं। और आईआईटी केजीपी का तो एनीवे बिल्डिंग का इट इज आईटी केजीपी का हाँ थोड़ा सिंबॉलिक सा है, थोड़ा सा यूनिक है, मतलब आई थिंक यू रिमेम्बर आईटी केजीपी का बिल्डिंग मोर देन अदर बिल्डिंग्स, या एंड ओके। ऑब्वियसली इट्स आवर कॉलेज सो वील रिमेम्बर। Right. तो आईटी कल्चर के बारे में I'll ask you, फर्स्ट आता है जनरली द फूड। तो Yes. So as the first day, I think first day itself, Triple M was the hall we were allotted. So I went inside the mess. Me and my dad, both of us had dinner there. I think dinner was the first meal we had. उसके पहले we had in एक कैंटीन थी वहाँ पे नीचे, ट्रिपल एम के पास में, तो वहाँ पे ही we had our lunch. वहाँ पे we got a sim and cycle and everything.
sim cycle, then all the chota chota saman for the hostel. Dinner we had, and we were so disappointed कि this is IIT, this is supposed to be the best college, मतलब one of the best colleges in the country, and such bad food they have. So my dad was like pretty disappointed, but I was also disappointed, but क्या करें अपन, we have to stay here. So then ठीक है, फिर धीरे धीरे मैंने तो फर्स्ट ईयर में खैर मी एंड माय रूममेट एंड 2 और 3 क्लोज फ्रेंड्स जो भी थे, हम तो ज़्यादातर मेस में ही खाते थे, पर बाकी लोग काफ़ी बाहर जाते थे, तो सेकेंड ईयर से देन वी स्टार्टेड गोइंग आउट। ओके, सेकेंड ईयर से नो अपना हॉल भी चेंज होता है, ट्रिपल एम से यू कम टू अ हाँ। मोर सीनियर हॉल, अपने लिए हम्म। दोनों के लिए एमएस हॉल था। तो उसका हम्म। एक्सपीरियंस कैसा था? देयर इज अ थिंग कॉल्ड ओपी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो उसके साथ हाउ डिड यू डील? हाँ, तो सेकेंड ईयर में आई वाज अलॉटेड एमएस। सो पहले तो आया मैं पहले दिन, तो जो अपने मेंटेनेंस सेक्रेटरी थे, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट हिज नेम वाज, ही चेंज माय रूम 3 or 4 times. So I had to shift my luggage 3 or 4 times, and by the end of it I was so angry at him and angry at the whole thing कि I don't know where my room is. I don't know who my roommate is. I have to eat lunch also. So I was angry that day, but then finally, so AW I was allotted. Then ठीक है, साथ में my roommate was also very nice. So हम आराम से अपना बहुत ही छोटा सा रूम था, आई रिमेम्बर, वेरी वेरी स्मॉल रूम। उसमें भी मतलब रूम्स में भी देयर वाज नो सिमिलैरिटी, लाइक बीच वाला रूम वाज बिग, कॉर्नर वाला रूम वर बिग, तो जो बाजू के जो दो बेचारे होते थे, दे हैड वेरी स्मॉल रूम्स, सो आई हैड दो द बेचारा वाला रूम। यप, मुझे याद है बिकॉज डिस्टिंक्टली ट्रिपल एम जहाँ से हम लोग आ रहे थे, वो वाला मोर रिसेंटली बना हुआ था, तो इसलिए रूम्स वर बिगर। तो एक था कि हाँ। रूममेट्स के लिए दो लोग रहने के लिए दैट वाज एनफ, बट जहाँ पे हम्म। एमएस में आया इट वाज लाइक नॉट इवन एनफ फॉर वन पर्सन, बट ठीक है, दो लोग। हम्म। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, विच इज आप एनएसएस या एनसीसी, मतलब व्हाट डिड यू गो इनटू फर्स्ट ईयर? गोइंग टू क्या, इट वाज अलॉटेड, एनसीसी वाज अलॉटेड, एंड द बैड थिंग इज कि इन सेकेंड ईयर अर्लियर देयर यूज्ड टू बी एन ऑप्शन ऑफ चेंजिंग इट, आई थिंक, बट in our time they did not change. They gave me NCC again. So the only good thing about NCC was the coupons they used to give, 20 rupees का coupon of टिक्का they used to give us. So उस 20 rupees के coupon के चक्कर में सैटरडे को people used to go. इंसेंटिव अच्छा था। Incentive, हाँ, that was the only incentive. Me and Aman Telkar, I think both of us were in NCC, and we used to go only for the coupon. फिर आते हैं हम लोग दी नेक्स्ट इज द इल्लू एंड रंगोली वाला कल्चर, जो कि केजीपी के लिए स्पेशली इट्स वेरी बिग थिंग। मतलब दिवाली पे जनरली घर जाने को नहीं मिलता लोगों को। हम्म। मतलब बंगालीज के लिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट हाँ, बाहर वालों से सुना है कि दिवाली इज अ बिग थिंग, मतलब फैमिलीज के साथ होना पड़ता है, जो कि नहीं मिला उस टाइम पे। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद इल्लू एंड रंगोली टाइम इन केजीपी? I think I enjoyed it. I was involved in both Illu and Rangoli, more in Rangoli, I think. So I enjoyed doing all the things, even though I was not that creative also, but I enjoyed staying the night with friends and enjoying and just doing some things, whatever was assigned to me. So it was a good experience for me. फेस्ट का भी कल्चर आता है, तो केजीपी में देयर आर टू बिग बिग फेस्ट, वन इज स्प्रिंग फेस्ट एंड वन इज क्षितिज। तो आप किस में ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, या क्या देखना ज्यादा पसंद था? So I was involved more in Kshitij because me and Saurabh, we were like we used to participate in all the events, like whatever events we used to come across, any competition like case study or whatever, we used to participate in that. So I was more involved in the KTJ, but I still excited more for SF because SF में there used to be a lot of bands and concerts and everything. So I माहौल was पूरा really डिफरेंट हो जाता था केजीपी का उस टाइम। हाँ, पूरा लगता ही नहीं था कि कैंपस अपना ही है। और वो आई थिंक जो वीकेंड्स में वी यूज्ड टू हैव दिस स्प्रिंग फेस्ट या क्षितिज, तो वही फ्राइडे नाइट से स्टार्ट होकर मंडे, वो हाँ। गारंटीड था कि मंडे को क्लासेस नहीं होंगे, तो वो टाइम इतना अच्छा रहता था। इट वाज हाँ, वो कोई इवेंट फंस जाए तो क्लास नहीं होगी फिर, तो दैट वाज आल्सो नाइस। वेरी एक्साइटिंग। मतलब और बाकी कॉलेजेस से आते थे लोग, हमारे उधर वो नीचे कॉमन रूम्स में सोते थे वगैरह।
सोना कितना ही होता था, आई डोंट नो। के आई आई टी के लोग आते थे ना, के तो बोलते थे कि किंग ऑफ आईआईटी हैं हम। बड़ा मजेदार होता था। एक था कि आपका कोर्स वर्क, राइट, आपने मैकेनिकल लिया, डुअल डिग्री, तो फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड, तो फिफ्थ ईयर तक, मतलब व्हाट वाज द प्रेशर लाइक? या आई वाज मैकेनिकल का तो सुना है इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। आई वाज नेवर मच इंटरेस्टेड और दैट टैलेंटेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेम में ही सब्जेक्ट था मैकेनिक्स, तो उसमें ही मिड मिड सेम था, तो उसमें मेरे 100 में से शायद 20 या 30 नंबर ही आए थे। तो देन आई आई थॉट, देन आई रियलाइज एक्चुअली कि आई वाज सो बैड इन फिजिक्स, स्पेशली बैड इन मैकेनिक्स, एंड देन आई हैव टेकन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर नो रीजन। सो देन आई लर्न कि यार इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ठीक ठीक से, नहीं तो पास नहीं होंगे आसानी से। तो सेकंड ईयर में तो कोर सब्जेक्ट्स आ गए पूरे, तो सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर वट टफ, but tough more in the sense that I did not study also. Second year is very chaotic. So I did not study much also. Some people also gave bad advice कि curricular is everything. So I believed them. So then I totally like gave up on that. So barely I managed to uh, come above, just above 8 or some 7.9 or something in second year. Third year में it got much worse. Like third year में तो I at one point I touched 6.9 also. So then I realized कि नहीं, we have to like change courses and focus on studies also. So then I think third year का second sem से then I became serious, and then I learned कि यार mechanical is interesting, because I had good people, good friends also with me in the wing who were like very interested in mechanical, and क्या कहते हैं intelligent people also. So they used to teach me. I used to sit with them and they taught me कि ऐसा ऐसा ये है। तो तब समझ में आता था कि यार अच्छा है सब्जेक्ट, तो अच्छा है, पढ़ा ही नहीं अपन ने। ग्रेट। हम्म। तो फिर मैकेनिकल का फोर्थ और फिफ्थ ईयर में एक तो होता है कि इंटर्नशिप्स, फिर होता है कि जॉब्स का भी। तो हाउ डिड योर प्लेसमेंट सीजन, जो कि अभी दिसंबर में इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, हम्म। केजीपी और डिफरेंट आईआईटीज में, तो हाउ वाज योर प्लेसमेंट सीजन लाइक? So I did not have a particular thing in mind till my fourth year कि what I want to do with in terms of job. As I said, I participated in a lot of things. Everything I participated in, जितने टाइप के भी कंपटीशन हो रहे हैं सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब में मज़ा भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड ईयर में इंटर्नशिप भी, आई डिड नॉट हैव वेरी ग्रेट इंटर्नशिप, ऐसे ही था कुछ तो मतलब होम टाउन में ही, मतलब एमपी में ही किसी कंपनी में मैंने कर लिया था, बस ट्रेनिंग टाइप की। इट वाज नॉट एन इंटर्नशिप, इट वाज अ ट्रेनिंग। मतलब फैक्ट्री में जाके यू एक्सपीरियंस थिंग्स एंड लाइक राइट अ रिपोर्ट अबाउट इट एंड यू डन। देन फोर्थ ईयर में आई गॉट सीरियस कि देन यू हैव टू, इफ यू हैव टू बिल्ड योर सीवी, यू हैव टू बेसिकली शो देम समथिंग कि you have done. So मैं, me and Shashank, we both stayed back in the campus fourth year के end sem के बाद, and then we had like home, मतलब work from home internships थी हमारी off campus, मतलब on campus ही रहे हम लोग पूरे समर में। तो उसमें आई डिड टू इंटर्नशिप्स, तो उसका फिर उसके कारण देन आई अंडरस्टूड कि यार फाइनेंस इज अ थिंग विच कैन बी टेकन सीरियसली एंड विच कैन बी कंसिडर्ड फॉर प्लेसमेंट्स। तो फिर फिफ्थ ईयर के इनिशियल सेम में भी थोड़े कोर्सेज वगैरह मैंने लिए, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, कोर्सेरा वगैरह से लेके थोड़ा सा सीख लिया क्या है कैसा है। तो दैट हेल्प मी इन प्लेसमेंट्स। ओके। तो वहाँ से विल सेगवे इनटू द ऑलमोस्ट थर्ड सेक्शन की लाइफ आफ्टर आईआईटी। तो आपने प्लेसमेंट से पता किया कि ओके, फाइनेंस इज अ गुड फील्ड फॉर यू, तो वहाँ से यू वेंट टू जेपी मॉर्गन, राइट? तो वो वाला जर्नी क्या था, एंड हाउ व्हाट डिड यू लर्न एट जेपी मॉर्गन? जेपी मॉर्गन में मतलब जब प्लेसमेंट हुआ तो वेरी हेक्टिक ना प्लेसमेंट, एकदम हालत ख़राब हो जाती है आदमी की, पता नहीं होता है क्या होना है। तो मेरा शॉर्टलिस्ट बस डे वन में था तीन चार कंपनीज में, उसके बाद मेरा शॉर्टलिस्ट ही नहीं था, डे टू में, डे थ्री, उसके बाद कुछ शॉर्टलिस्ट था ही नहीं मेरा। तो डे वन में शुरू की तीन चार कंपनी में हुआ नहीं मेरा। देन लास्ट जेपी मॉर्गन वाज द लास्ट, आई वाज टोटली डिवास्टेटेड कि इसमें होना तो है नहीं। अब जब बाकी कंपनी में नहीं हुआ तो जेपी मॉर्गन में कहाँ से सिलेक्शन होगा। तो फिर आई वाज सैड, आई वाज सिटिंग, आई गेव द इंटरव्यू इन फुल कॉन्फिडेंस दैट आई विल नॉट बी सिलेक्टेड, सो आई वाज स्पीकिंग लाइक ठीक है, गप्पे मारने आए हैं तो गप्पे मारेंगे।
सो उसके बढ़िया, मतलब जो पता था वो बताया, जो नहीं पता था नहीं बताया. And then I went back also. I went to Srinivasan. He was upstairs on the above floor above me. He was giving EXL का interview. तो I went with him, sat with him with my phone on silent, और उसके साथ मैं गप्पे मार रहा हूँ, उसको सपोर्ट कर रहा हूँ पूरा. फिर उसके बाद उसी बीच में द प्लेस कॉम इज कॉलिंग मी कि ना माई फोन इज साइलेंट, प्लेस कॉम इज कॉलिंग मी फॉर सेकंड राउंड एचआर का इंटरव्यू. So then I went downstairs and then I see the call. Then she's calling me and calling me for the HR interview. Then I got full confident कि यार फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया पहली बार. तो फिर then I gave the HR interview which also went very well. And after just after coming outside of the HR interview, she told me, Placecom told me कि दोनों जगह से कंफर्म हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया है. Then I was like very happy that day. I remember me and Anand, we both were awake the entire night, I think, mostly to decide what status to post on Facebook, and and then also because we had to wake up other people who had interviews in early morning, other wingmates, because the whole wing was basically awake for 2 3 past days, some for themselves, other for helping us. Like the people who had interviews in the later days for core companies, they were helping us. Then when we got selected, we helped them. So it was all a very good, very hectic but very good sort of environment. काफी अच्छे Then that बॉन्ड्स बन जाते हैं ना, मतलब दूसरों के हाँ लिए वेरी, मतलब एक तो है कि प्रेशर रहता है उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा, प्लस पता हाँ चलता है कि हु आर योर रियल फ्रेंड्स, एंड फिर मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम amazing जब friends. Like I think I have very good friends like all in all phases of my life. Like school के इसमें दो दो तीन तीन लोग ही हैं पर good people. तो देन हाँ फिर जॉब जॉब में तो फिर गए, पहले गए तो जॉब वाज अ गुड एक्सपीरियंस. उसमें भी आई वाज इन इंडोनेशिया टीम, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, 1 2 साल काम किया. मुंबई में थे, मुंबई में अदर पीपल ऑल्सो came to Mumbai, like Akash came, then Ankur was there, then Shivam was there, then Akshay was there. So people from our own hostel were there. So we enjoyed a lot in Mumbai also. 2 years in Mumbai were like amazing. फिर व्हाट क्लिक्ड फॉर यू, मतलब जेपी मॉर्गन से सीधा आपने यूपीएससी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, एंड मतलब व्हाट वाज द डिसीजन, व्हाई दैट डिसीजन, एंड फिर प्रिपरेशन फेज कैसा था उसके लिए? So I think it was always in the back of my mind, yeah, this is something which can be considered to give, but I did not want to do it in college because finance or this private sector enticed me more, and I wanted to experience that also before like giving up entirely on that interest. So then I think in 2000 what 18 के 18 में Jan या Feb में my boss left the company. Basically, my analyst left the company. So I was alone for like with very less workload for 2 3 months. So then I thought and discussed with my friends, my family, कि what to do, can this be considered? So then that whole idea came into being कि ठीक है, now it has been 2 years, you have enough savings, you have enough experience also that if you don't get selected in 1 2 years, you can come back to finance, you can go and do MBA or anything. So it was sort of a safe bet for me to exit at this point and come back later if things don't turn out the way I wanted them to be. So then I started reading, basically analyzing of on how whether it's possible for me to give it and clear it all or not. So in my free time in office, I used to like read through all the question papers of past years and categorize into segments and see ki, हाँ, how what is the level of toughness of these questions, what are they expecting us to do, and what is the rank which you need to acquire to become an IAS officer and to become IPS, to become IRAS, basically all the analysis which you do before getting into the whole thing. So then I decided that it can be done and I think I should do it also. So I made the decision. I think to some 30th of May, I think I put the paper and then went back home and studied for one full year. ओके, तो
मतलब पार्टन माई इग्नोरेंस, मतलब बस ज़्यादा पता नहीं है यूपीएससी के बारे में, नॉट इवन कॉलेज टाइम पे या फिर उसके बाद भी सुनता था कि पीपल, माई फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बट उतना ही पता था कि इट्स वेरी टफ। फिर लास्ट ईयर देयर वाज अ फिल्म रिलीज लाइक 12th फेल, जिसमें इट्स अ वेरी नाइस फिल्म एंड इट shows the journey of a UPSC aspirant, कि कितना टफ होता है, especially coming from humble background, poor family. But what was your preparation like? मतलब एक तो है कि आपने आईआईटी का प्रिपरेशन इज वेरी टफ, वेरी वेरी टफ, इन कोटा आपने प्रिपेयर कर लिया। वाज दैट अ कॉन्फिडेंस बूस्टर कि मैं हाँ यूपीएससी में भी क्लियर कर सकता हूँ अगर प्रिपेयर किया तो? ऑब्वियसली मैन, वेरी ऑब्वियस दैट इज, मतलब यू कीप ऑन basically gathering accolades, and that gives you more confidence to basically capture the next flag. So IIT, then I think JPMorgan, all of these things gave me confidence that okay, I can do whatever I decide to do. So with that confidence only I went in from first day कि I have to do it in 1 year. I decided I have to do it in 1 year, and I'll do whatever it takes to do it in 1 year. Like I'll put all in, जितना भी पढ़ना है पढ़ेंगे, जैसे भी पढ़ना है पढ़ेंगे. So then I did not want to go to Delhi also for coaching because I was scared. I had bad memories of Kota. I did not want to experience that pressure again of like seeing all other people and around me studying for the same thing. So I wanted a quiet place to study. So I went home. एंड यस विद दैट लॉजिक ओनली कि यार एक साल में ही करना है जो करना है, जितना मेहनत लगे, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट कैसे होगा, कितने डिप्रेशन में देंगे या कितनी टेंशन होगी, आई डिड नॉट वांट टू एक्सपीरियंस आई हैड। तो मैंने कहा कि एक बार में ही अपन जितनी फाइट मार सकते हैं मार लेते हैं, तो किया। फिर थैंकफुली जो अब आई थिंक इट्स लक ऑल्सो कि यू गेट टू नो द राइट थिंग्स अबाउट प्रिपरेशन एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। सो समहाउ आई गॉट टू नो कि इस चीज को ऐसे ऐसे करना है तो हो जाता है, और वैसे वैसे करके हो भी गया, है ना। तो अब हो गया, आप क्या करें। ओके, अब सपोज आपको मैं पूछूं कि 3 टिप्स, क्योंकि एक तो है आईआईटी में यू गेट 2 चांसेस, या फिर अपने टाइम पे देयर वर ओनली हम्म, 2 चांसेस, अभी जस्ट रिसेंटली दे हैड अनाउंस्ड कि 3 चांसेस भी मिलेगा। तो अच्छा। बट यूपीएससी में देयर इज अ लिमिट ऑफ व्हाट 5-6 टाइम्स यू हम्म, कैन गिव। तो हम्म। is that something one should keep in mind कि मतलब 1-2 साल में नहीं हुआ तो कितनी बार ट्राई करना चाहिए? हाँ, एक वो है, एंड देन मतलब कोई प्रिपरेशन टिप्स जो आपको हेल्प किए, मतलब कि हाँ 1 साल में ही जो टाइम लिमिट आप मान के चल रहे थे उसमें आपको क्लियर करना है, तो वो व्हाट आर द 3 थिंग्स जो कि आपको मैसिवली हेल्प किया हो? आई थिंक द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग was कि you have to basically break down the whole syllabus and exact everything कि कैसे आपको एग्जाम को सॉल्व करना है। बेसिकली एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व ना, कि हाउ टू गिव द एग्जाम, व्हाट टू स्टडी फॉर इट। So I think that also that should be given some time before jumping into things, because planning is half the thing, half the journey, as many people say. So planning बहुत important होती है, कैसे आपको एग्जाम सॉल्व कर मतलब क्रैक करना है। The next important thing obviously mock test. The more number of mock tests you give, the more the probability of you clearing the exam, because you have committed most of the mistakes which you could commit beforehand only. And third is third, I don't know. Well, I don't. I think these two mistakes, these two things are, I think, cover everything. Right. फिर आपका आपके ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी, तो आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो व्हाट वाज द रिजल्ट लाइक? मतलब आपका इस बार तो होपफुली आप Mm. ये सो नहीं रहे थे? And I was not sleeping, but I was sick. On the day I was in Sagar and I was sick. I was like very sick, and it was COVID time. So I was scared also कि whether I have COVID or not. I was sitting in my house having a nice cup of tea, hot tea, with the sore throat, and my friend calls me, Shashidhar calls me कि congratulations and see the result. I was like, where has he seen the result? There is no official announcement and everything. So then I go see in the website,
there are two websites of UPSC apparently. I did not know the second website. तो second website पे I checked and उसमें रिजल्ट आ गया था और उसमें हो भी गया सिलेक्शन। पर आई पर मतलब इस समय तक क्या हो चुका था कि बहुत सारे फेक पीडीएफ सर्कुलेट हो चुके थे। तो मेरे को था कि यार जब तक ऑफिशियल जो दूसरी वाली है यूपीएससी डॉट क्या कहते हैं government.in वाली वेबसाइट उस पर नहीं आता तब तक आई डोंट थिंक वी शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। So then we waited a full 10-20 minutes, I think, before the PDF was uploaded there also. Then we were happy. कि यार ठीक है, thing is done. We finally selected. And but still the thing was not over because I was sick. And it was COVID. So I was more scared that I will die. So I got my father to get me checked like the COVID वाला वो जो टेस्ट होता था ना क्या होता था, दो टाइप के टेस्ट होते थे, रैट था और एक और था जो आरटीपीसीआर वाला ना? हाँ आरटीपीसीआर जो थोड़ा सा ज्यादा इन्वेसिव होता था। तो आरटीपीसीआर का टेस्ट हुआ फिर उसका एक एक या 1.5 दिन बाद रिजल्ट आया। फिर उसमें नहीं निकला कोविड। फिर आई वॉज रिलैक्स्ड कि यार ठीक है, इज नथिंग सीरियस। ओके, तो खुशी किसके लिए ज्यादा था कि कोविड नहीं हुआ कि यूपीएससी? हाँ देन द होल थिंग वाज कंपाउंडेड। अच्छा, हाँ नाइस। ओके, तो उसके बाद आपका यूपीएससी सिलेक्शन के बाद होता क्या है? मतलब आई एम क्यूरियस टू नो। यूपीएससी सिलेक्शन के बाद फिर आप मतलब आपको लेटर आ जाता है कि क्या कहते हैं इस डेट से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। यू हैव टू कम देयर विद दिस थिंग्स। तो देन यू बुक योर टिकट्स एंड यू गो टू मसूरी। तो बेसिकली enjoy the next 6 months। ट्रेनिंग होती है पर द सीनरी एंड एवरीथिंग एंड द कॉन्फिडेंस एंड द हैप्पीनेस आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर few years for everyone, so everybody is happy, the माहौल is very jovial। तो फिर आपका सुना है कि भारत दर्शन का कुछ कॉन्सेप्ट है, राइट? तो कब होता है और आपके लिए कैसा था वो? So usually in normal times it happens like there are two phases, three phases of our trainings. The first is the foundation course, second is the phase one, and then डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद फेज टू। तो फाउंडेशन कोर्स और फेज वन के बीच में यूजुअली होता है वो। पर हमारा कोविड का समय था तो हमारा द एंटायर एफ फाउंडेशन एंड फेज वन साथ में हो गया। फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पे हम आ गए फिर नवंबर दिसंबर में ऑफ द नेक्स्ट ईयर लाइक 2020 में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो 2021 के दिसंबर स्टार्टिंग में हमारा भारत दर्शन हुआ था। ओके, फिर अभी आपका करंट जॉब रोल क्या है और आप कहाँ पे हैं? So I've been allotted Madhya Pradesh cadre, so I'll be spending most of my career here in Madhya Pradesh. So currently this is my second posting, मतलब third posting but second uh, basically promotion. So I was an SDM before. Now I'm a CEO, Chief Executive Officer, Jila Parishad, which is a developmental role. You look after the rural development part of things in the district. ओके, आपका लाइफ इज एन अमेजिंग, मतलब कॉन्कॉक्शन कैसे बोल सकते हैं कि उसका कोटा आपने एक्सपीरियंस कर लिया जिसके ऊपर एक सीरीज बन गया, कोटा फैक्ट्री। फिर आपने यूपीएससी किया जिसके ऊपर वो बहुत ही अच्छा सा 12th फेल आ गया। देन आप सीईओ जिला परिषद, कुछ आइडिया है हमें अबाउट दैट सीरीज पंचायत बोल के, जो कि ग्राम या रूरल एरियाज में कैसे चलता है, द गवर्नमेंट हाउ इट वर्क्स? ओके, सो हाउ मच ऑफ दैट जो भी हम लोग को पता चलता है, हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू, और आपके लिए एक्सपीरियंस वाज इट डिफरेंट, या फिर व्हाट आर द मेन चैलेंजेस लेट्स से कि आपको डे टू डे फेस करना होता है? Day to day challenges. So I think so. I'm posted in a pretty uh, backward part of the state, backward district. So यहाँ पे थोड़ा सा मैन पावर इज लिमिटेड है ना। देर आर लेस नंबर ऑफ पीपल पोस्टेड, सो यू हैव टू मैनेज विद दैट। यू हैव टू मोटिवेट, यू हैव टू कीप मतलब कीप देम मोटिवेटेड टू वर्क इन गवर्नमेंट सेटअप। यू हैव टू play push and pull, and because there is no motivating factor as such in private, because in private sector you can motivate them through bonuses, through promotion, through everything, so there is motivation factor। but यहाँ पे in government setup में everyone knows what their next step is going to be through मतलब for their entire career they know, so you cannot motivate them, you cannot motivate a demotivated person that much। if he does not want to work he will not work, so you have to somehow make way, you have to somehow motivate him also। Plus, this is a tribal district, so
it's a very good sort of opportunity also to see the challenges, to basically give your whatever effort you can to improve the district by some amount. Okay, any suggestions? मतलब मैं अब दो पार्ट में डिवाइड करूंगा पहले. Any suggestions for students who are aspiring to clear IIT? तो मतलब दो तीन चीजें किस पे काम करने चाहिए उनको? सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप पढ़ाई यदि कर रहे हो तो 11th 12th में ही आई थिंक यू शुड स्टार्ट, यू शुड नॉट वेस्ट योर इंटायर अर्ली मतलब चाइल्डहुड इन प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, क्योंकि होना है तो उन 2 साल की पढ़ाई में होगा, उसके नहीं होना है तो फिर आपका नहीं होगा सिलेक्शन, है ना. देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग योर इंटायर लाइफ without experiencing anything else, because you may very well want to be, and you have talent to be somebody something else apart from being an IIT graduate, है ना. सो आई थिंक प्रिपेयर इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड जो कि जो भी लेजिबल है, एंड डोंट टेक मच स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस से कुछ नहीं होता है. स्ट्रेस हम भी 11th 12th में लेते थे, बिना काम की बीमारी होती है बस. तो विदाउट टेकिंग स्ट्रेस आई थिंक वन शुड गिव हिज और हर फुल एफर्ट्स, है ना. दैट इज वन थिंग इन आईआईटी आई थिंक बोथ. एंड सेकंड इज ऑब्वियसली गिव प्रैक्टिस more and more, because that is an easy and more sure short way for any exam. Moving on to the last section, which is rapid fire, quick questions, quick answers. So favorite subject before IIT? Chemistry. Okay, केमिस्ट्री में कोई पार्ट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? पता नहीं, बस मैं रट लेता था चीजें जल्दी, तो केमिस्ट्री इसलिए ज्यादा पसंद थी. इट्स वेरी इजी टू जस्ट मग अप थिंग्स. ओके, नाइस. फेवरेट प्रोफेसर इन IIT? There's no favorite professor in IIT. I don't remember any name. I don't remember any name. I think the class I liked most was the intellectual property, corporate copyright, trademark. ये वाला class I liked very much. यप, मुझे मेरा भी आंसर इज द सेम. मुझे याद है हम लोग वो विक्रमशिला या वो वन ऑफ द क्लासरूम्स में होता था. हम्म. आईपीएल बोलते थे उसको, इंटेलेक्चुअल आईपीएल, प्रॉपर्टी लॉ. हाँ. एंड हाँ. वो क्लास वाज सो इंटरेस्टिंग. मतलब एक तो इट वाज नोवेयर नियर कि जिसलिए हम लोग पढ़ने गए हम्म. थे. कोर्स में वही. गया, वो इज वेरी फार अवे. बट वो टॉपिक्स वर सो इंटरेस्टिंग. मतलब कि हाँ, हाँ. चलो आइडिया है. Who owns the idea? मतलब जिसके पास आइडिया हाँ. है या जो काम कर रहा है उस आइडिया. तो दैट वाज लॉट वेरी ऑफ थिंग्स, फन. हाँ, वी केम टू नो उसमें कि गाना बज रहा है यदि उसमें आपके किसमें रेस्टोरेंट्स में, तो दैट आल्सो नीड्स टू बी कॉपीराइटेड, उसका भी पैसा देना पड़ेगा आपको. या जो कि अभी काम आता है सपोज में. बहुत ही तुच्छा सा एग्जांपल है, बट स्टिल. जैसे मैं मोन्टाज में इनिशियली मैं एक सॉन्ग डाल रहा हूँ. यूट्यूब का भी कॉपीराइट लॉज होते हैं. तो कुछ है कि इट्स हम्म. कॉपीराइटेड, बट द क्रिएटर हैज मेड इट यूजेबल फॉर फ्री इन यूट्यूब. तो उसके हम्म. लिए मतलब कॉपीराइट तो मे बी टिक आएगा कि कॉपीराइट है, देखना बट पड़ता है. हाँ, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. तो या दैट हम्म. हेल्प्स. व्हाई नॉट. आईआईटी में एकदम वो सब भी पढ़ाते हैं और वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, अच्छा कोर्स था वो. Okay, most enjoyable year at IIT. फोर्थ ईयर. फोर्थ ईयर वाज चिल, वेरी चिल. Okay, most confusing year at IIT. सेकेंड ईयर. Uh, सेकेंड ईयर क्योंकि कुछ पता नहीं होता है, उल्टी सीधी एडवाइस मिलती है यहाँ वहाँ से, तो आई थिंक इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड chaotic. Favorite lingo. Favorite lingo, I think, is peace. But one thing I still use is दादा करके, जो दादा है ना, मतलब we call each other दादा. Mhm. So that has stayed. Yeah, with that, we come to the end of the episode. Yeah, it has been great. So, firstly, connecting with Prakhar, gaining a lot of insights as to preparing for IIT, preparing for finance, career, then preparing for UPSC, clearing all of the above, and then finally working in a government post, helping India get better. So, yeah, thank you, Prakhar, for joining the podcast. And audience, to the audience, there will be a list of videos you can watch here. And please like, subscribe, share to help this channel grow as well and bring more such stories out in the open. So yeah, that's been all. IIT podcast with Somna signing off.